Good morning to all of you. Today we will discuss the thorax of insect. The thorax. Here is the thorax, head, thorax, and abdomen. The thorax of the insect is the second of the three major tagma or segments that makes up the insect body. The second most important segment of the body. Thorax of insect, where all appendages of locomotions or including leg and wings are present, is the part is thorax. Thorax consists three segments known as prothorax, mesothorax, and metathorax. Thoracic segment bears one pair of legs. Each thoracic segment. Here is the prothorax, one mesothorax, middle metathorax is the hind leg. Each thoracic segment bears one pair of legs. If the insect capable of flight, the metathorax bears the wings collectively. The wing-bearing segment of insect is called Pterothoracic segment. The prothorax, which is very first segment of the thorax, comes after the head and the cervix, neck-like membranous region that help to connect the muscles from the head of the thorax. The job of the prothorax is usually serve as a place of attachment of the first pair of legs, although in some insect orders such as Orthoptera, where the grasshoppers are included, Coleoptera, beetles, or Blatoidea, where the cockroaches are included. The prothorax can also serve as hard plate that protect the pterothoracic segments. The prothorax that has taken the shape of the hardened plate can be most clearly seen on grasshoppers. The plate covers the cervix and the anterior part of the mesothorax. The mesothorax comes directly after the prothorax. It bears one pair of legs, and if the insect is capable of flight, the first pair of wings. The metathorax then comes after the mesothorax and also bears one pair of legs and second pair of wings. The insect thorax has gone through the incredible evolution of change in order to accommodate flight, because not all insects fly. There are differences between the thorax of flying insect and non-flying insect, as well as differences between the thorax of larval flying insects and adult flying insects. The primary segmentation or the secondary segmentation. Primary segmentation occurs in non-sclerotized insect, the larvae, and soft-bodied insect. Primary segmentation works by physically shortening the segment in order to move the insect along, like how a caterpillar or inchworm moves. Is the prothorax, mesothorax, and metathorax. Mesothorax and metathorax are combinedly known as the pterothorax, where the wings are present. Ptero means wings. From the diagram on the right, you can see how the muscles within the thoracic are directly attached to the thoracic segment. When those muscles contract, whole segment contract, making a inchworm scrunch up. ये हम देखते हैं कि ये एक्चुअल सेगमेंट है और यहाँ पर ये मसल्स हैं. यहाँ हम देखते हैं कि ये एंटीकोस्टल सूचर और सेगमेंटल डिवाइस है. यहाँ पर ये एक्रोटरगाइट है, ये टर्गम डोर्सल साइड से टर्गम है, निचली साइड में स्टर्नम देखने को मिलेगा. ये थोरैक्स में और एब्डोमेन में हम ये चीज देखते हैं कि डोर्सल प्लेट जो होती है उनको हम टर्गम कहते हैं या टर्गाइट कहते हैं, और नीचे वाली प्लेट जो होती है उसे स्टर्नम या स्टर्नाइट कहते हैं. ये एक्रोस्टर्नाइट हो गई नीचे की तरफ, या एक्रोटरगाइट हो गया ऊपर की तरफ, और ये मसल्स हैं यहाँ पर. यहाँ पर ये किस तरह की ये फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है कि यदि ये बॉडी स्ट्रेच हो पाती है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के कारण से यहाँ पर ये बॉडी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, और जब वापस से सिकुड़ता है तो ये
एंटीकोस्टल सूचर जो है अंदर की तरफ धंस जाता है, ये एंटीकोस्टल सूचर अंदर की तरफ धंस जाता है, जिसकी वजह से बॉडी शॉर्ट हो सकती है और इंक्रीज हो सकती है लेंथ के अंदर। हम ये अभी जो बात बता रहे थे, ऊपर की साइड जो है जिसे हम नोटम कहते हैं, टर्गम कहते हैं, टर्गाइट कहते हैं, नीचे की तरफ स्टर्नाइट कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं और प्लूरोन। दरअसल में स्टर्नम इज सिंगुलर और स्टर्नाइट इज प्लूराइट ओ प्लूरोन प्लूरल। प्लूरोन लेटरल साइड का प्लेट है और इसे प्लूराइट भी कहते हैं। प्लूरोन इज द सिंगुलर और प्लूराइट इज द प्लूरल। देखो अब टर्गम और प्लूरोन के बीच में तो विंग उपस्थित है, यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, और प्लूरोन और स्टर्नम के बीच से लैग्स का ओरिजिन हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं एक्रोटर्गाइट आपको ये देखने को मिलता है, प्रीस्कुटम देखते हैं, स्कुटम देखने को मिलता है, स्कुटेलम देखने को मिलता है। ये एंटीकोस्टल सल्कस है, ट्रांसवर्स सल्कर है, प्रियलर आर्म है, एंटीरियर नोटल आर्म है, सब स्कुटेलर सल्कस है, पोस्टीरियर प्रोसेस है, ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। The secondary segmentation occurs in sclerotized insect that have hard plate over the thoracic segment. The hardened plates most likely evolve as a protective device because the hardened plates or sclerites cannot move like inchworm does. A membranous region is created called the conjunctiva where the segments telescope means underneath जैसे कहते हैं छुप जाते हैं into one another. Except for the most primitive lineage, the most insects have some degree of secondary segmentation in the thorax and abdomen. Secondary segmentation is often most evident in the abdomen. Targa overlap each other posteriorly, such that posterior border of the tergum overlap with the anterior border of tergum behind it. Along the anterior edge of each tergum is a costa, a rib or rib-like structure called the anticosta, associated suture called the anticostal suture. As the name implies, it is a true intersegmental suture. The anticosta, however, is frequently not exactly on the leading edge of the tergum, and the sclerotized strip anterior to it is the acrotergite. Immediately anterior to the acrotergite is a membranous region, conjunctiva, marking the region between adjacent terga. From doing comparisons of the targa, the external structures throughout the different insect and arthropods, we see that the anticosta marks the true intersegmental boundaries and the acrotergite belongs to the preceding body targa. The functionally dorsal part of the tergum combined with the acrotergite is called elinotum, the pterothorax. Yes, the pterothorax. As I explained above, the pterothorax is the collectively name of the meso and metathorax, which hold the wings. Overall structure, the entire thoracic region are fundamentally the same as the abdomen, but there are modifications for locomotion. The degree of modification depend on the flying ability of the insect. A very important modification that the thorax has that the abdomen does not is sclerotization in the pleural region. The pterothorax itself has many extra strengthening regions and the conjunctive is reduced, making the pterothorax is very rigid structure because the segment cannot telescope. Here, the basic diagram of the all feature pterothoracic segment diagram is being used literally. Here is the diagram. ये स्कूटम है, ये एलिनोटम है, दिस वन पार्ट पूरा, ये स्कूटेलम हो गया, ये पोस्ट नोटम हो गया, एंटीकोस्टल सूचर्स हो गया, ये यहाँ से जो एंटीरियर फ्रैग्मा है, ये पोस्टीरियर फ्रैग्मा है, ये प्रीस्कूटम है, ये प्लूरल विंग प्रोसेस है यहाँ से, और ये जो है बेसियल रीजना है और यहाँ सब रीजन है। यहाँ पर लेग वाला पार्ट है जिसमें यहाँ पर बेस स्टर्नम हो गया, यहाँ यू स्टर्नम हो गया, और यहाँ पर स्टर्नेलम हो गया, यहाँ एपिस्टर्नेलम हो गया, यहाँ ट्रोकेंटिन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर ये रूट ऑफ द प्लूरल एपोफाइसिस। ये एक विंग इंसेक्ट के लिए उसका लेटरल व्यू है थोरैक्स का।
ये वही टिपिकल विंग बियरिंग सेगमेंट, यहाँ पर उसी तरह का ये डायग्राम है। तो इस तरह से ये बात जो है इंसेक्ट के थोरैक्स की है, जो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।